So hello friends, this video is about the Payments of Wages Act and understanding its importance, its basic outlines. So this act was passed in 1936. So if you are interested in knowing the details about the timely wages and what deductions can be made from your pay and the employer responsibilities, here is a summary of this. So this act is very important for EPFO and APFC examination. Let's study it. So when should a worker be paid? So this is the very crucial questions which comes to our mind. Ki suppose I am working in a factory, तो मेरी payment as per this act within these 7 days. So in a month or for the period I have worked in an industry, I should be paid within the 7 days of finishing that work. For example, if a industry has less than 1,000 workers, then this provision acts. In other cases where the workers are more than 1,000, it can be within 10 days. Third, the working day. Payment should occur on a working day. So for example, you might have seen those who are working that your salaries are deposited in your account only on a working day. Usually on the first working day of a new month. So the termination. If someone is terminated, wages should be paid before the second day expires. So जो termination होता है क्योंकि वो immediate होता है, तो it should be before the second day expires. So who is responsible for the wages? Number one, employer. The employer is responsible for the payment of all wages under this act. Second, the contractor. तो कुछ example in say Maruti 100 contractual workers are working and above that there is one contractor who is in direct contact with the company and he provides those 100 200 laborers, right? So he is responsible for the wages, not the company directly. Company pays it to the contractor and then the contractor settles it with the laborers. Third, the employer's representative. The person designated by the employer responsible for complying with this act is responsible for the wages, which is very obvious, right? For example, I can say that a foreign company which is located in India, that company might have some representatives in India, then they are responsible, not directly that the owner of that foreign entity, right? फॉर एग्जाम्पल अगर टेस्ला का यहाँ पे कोई प्लांट खुलता है तो इलॉन मस्क को डायरेक्टली आप रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराओगे, हिज रिप्रेजेंटेटिव्स आर रिस्पॉन्सिबल. सो थर्ड, व्हाट कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम योर वेजेस. वेजेस के अंदर से कुछ डिडक्शंस होते हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं. नंबर वन इज ऑब्वियसली फाइन्स, बट इट शुड नॉट एक्सीड 3% ऑफ द वेजेस इन अ मंथ. ठीक है, तो अगर किसी का थोड़ा ज़्यादा भी है तो 3% करके नंबर ऑफ मंथ्स में जा सकता है. सेकेंड, एब्सेंस और डैमेज. फॉर एग्जाम्पल ही माइट बी एब्सेंट फ्रॉम हिज ड्यूटीज, तो उसको तो पैसा नहीं मिलेगा और द डैमेजेस ही हैज कॉस्ट टू द कंपनी, तो उसका शुड नॉट एक्सीड 50% ऑफ द वेजेस, राइट. थर्ड इज द इनकम टैक्स. तो इनकम टैक्स का जो TDS वगैरह का. फोर्थ इज द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, बट इट शुड नॉट एक्सीड 75% ऑफ द वेजेस इन एनी पीरियड. एंड व्हाट रिकॉर्ड्स शुड एम्प्लॉयर्स कीप. अब वेजेस दे रहे हैं तो कुछ रिकॉर्ड्स भी होंगे ना, तो एक तो रजिस्टर ऑफ वेजेस होता है विच ही हैज़ टू कीप. सेकेंड, रजिस्टर ऑफ डिडक्शन, जितनी भी डिडक्शन हो रही है उसका भी एक बनाना पड़ता. थर्ड, रजिस्टर ऑफ एडवांसेस, तो जितने उसने लोन एडवांसेस ले रखे हैं, किसी भी टाइप के एडवांसेस हैं. देन व्हाट आर द पेनल्टीज फॉर ऑफेंसेस. सम काइंड ऑफ फेलियर इज देयर टू पे ऑन टाइम, देन फाइन्स अप टू 750 रुपीज फॉर ईच डे. जैसे 3 दिन अगर डिले हुआ तो 750 इतना आप. सेकेंड, फेलियर टू मेंटेन द रजिस्टर. अगर ये रजिस्टर में चीज़ें नहीं हो रही है तो भी उस पर 1,000 रुपीज़ की, विच इज़ अप टू 5,000 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट ऑफेंस एंड 10,000 रुपीज़ फॉर द सब्सिक्वेंट ऑफेंसेस. देन विलफुल ऑब्स्ट्रक्शन और रिफ्यूजल टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स. अगर डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं करा रखा उसके ऊपर लगेगा. देन इम्प्रिजनमेंट एंड एडिशनल फाइन्स, ये सब चीज़ें हैं. फिर है, हाउ डज द एक्ट अप्लाई टू कॉन्ट्रैक्ट लेबर. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. If the employment of contract labor is covered by the Minimum Wages Act of 1948, the Payment of Wages Act applies to them as well. ठीक है, तो जो Minimum Wages Act अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो अगर वो अप्लाई हो रहा है उन पर तो ये भी होगा Payment of Wages Act. फिर है conclusion, the Payment of Wages Act sets guidelines to ensure timely payments, deductions and record keeping. So understanding the act is essential to ensure the employers meet their obligations and workers are not taken advantage of.
So this is the very brief conclusion, right? Thank you very much. Thank you very much for this session.